तो बाइकर और एंटरप्रेन्योर्स में एक चीज़ कॉमन होती है, हाँ, दोनों पागल होते हैं. I'll say don't. Sounds controversial. Can you deliver that value at a price point where you can make a profit? कि हम लोग ना हमेशा कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी हाँ, लोग कहते हैं काउंटर प्रोडक्टिव हैं कि वी शुड गो ऑल ग्रीन एंड कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करो. बट वो कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी? कि आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, provide job opportunities to the masses of this country while not having a negative impact on the environment. The viable option would be electric two-wheelers. Hi guys, welcome to the first episode of Collative Podcasts. In this and the upcoming episodes, we are going to take some deep dive into the insights of that we can get from the life of some successful entrepreneurs, some trailblazers who have already paved their way to success. We are going to try and understand what have they learned along the way, what they started the journey with, and how the whole process has evolved. And our first guest is Mr. Dhairya Gupta. He's right now the founder of Earthride. Sir, ये कैसे हुआ? I always wanted since I was a child कि and I always used to think कि हम लोग ना हमेशा कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी हाँ, लोग कहते हैं काउंटर प्रोडक्टिव हैं, राइट. एंड कि वी शुड गो ऑल ग्रीन एंड कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करो. बट वो कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी? आई ऑलवेज वाज अ there प्रोपोनेंट ऑफ दैट बोथ कैन हैपन, सस्टेनेबल ग्रोथ कैन हैपन. आई वाज पार्ट ऑफ बैप्सन का एनवायरमेंटल क्लब Okay. and we used to talk a lot about green energy and stuff like that in it. तो मैंने कहा नहीं पॉसिबल है. तो उसी समय गिग इकॉनमी बहुत ग्रो हो रही थी and I could see a huge population of these people who are not so educated but they're finding jobs in this gig economy. हाँ, Right? मैंने कहा इनको enable करते हैं. But enabling them with a petrol motorcycle will reduce the carbon footprint. तो मैंने कहा एंड सिंस आई एम एन ऑटो एंथुजियास्ट आई वाज ट्रैकिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इन ऑटो टेक. तो मैंने देखा ईवीज वर जस्ट कमिंग ऑफ एज. तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स अब एक बहुत वायबल ऑप्शन बन रहे थे इन 2019 2018 के टाइम पे विद लेड एसिड बैटरीज बीइंग रिप्लेस्ड विद लिथियम आयन बैटरीज with more reliability, range, etc. So then I came out with this idea कि I want to contribute to growth of Indian economy, provide job opportunities to the masses of this country while not having a negative impact on the environment. The viable option would be electric two-wheelers, being replacing the petrol two-wheelers for a last-mile delivery to start with. राइट. तो दैट इज़ वेयर द आइडिया ऑफ अर्थराइड केम. फिर उसके बाद काफ़ी आइट्रेशंस हुए, थॉट अबाउट इट अ लॉट कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं. तो एक तो सिंपल रेंटिंग बिजनेस हो गया, हाँ, राइट. एक हो गया आपका सेल्स, यू बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, हाँ, और यू स्टार्ट अ कंपनी ऑफ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स यू मैन्युफैक्चर. लाइक देयर आर कपल ऑफ ऑप्शंस बट सब में पैसा बहुत लग गएगा. लाइक इफ यू हैव टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, तो मैंने कहा पैसा है नहीं तो क्या करें. तो फिर रेंटिंग ऑप्शन रह जाता है. देन आई लुक्ड एट व्हाट आर द रेंटिंग ऑप्शंस ऑफ दैट आर अवेलेबल, be it petrol two-wheelers or be it electric two-wheelers. right. Then I saw there were a lot of problems with that model कि vehicles आपके long term last नहीं करते, वो नहीं करते. While this was going on, I was looking at these different things. I joined Swiggy as a delivery rider just to understand the customer. तो आई बिकेम अ स्विगी राइडर. पहले मैंने अपनी डिलीवरी करी पेट्रोल मोटरसाइकिल पे. अच्छा. अपनी मैंने कहा चलो इतनी डिलीवरीज मैं कर रहा हूँ ऑन एन एवरेज, इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं, आई एम डूइंग अबाउट 15 ऑर्डर्स पर नाइट. फिर मैंने एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी से बात करी, उनका इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मंगवाया फॉर अ वीक. फिर मैंने उस पर डिलीवरीज करी एंड आई वॉज डिलीवरिंग एज मैनी ऑर्डर्स आई वॉज इन पेट्रोल टू व्हीलर. राइट. तो मैंने कहा ये रिप्लेसमेंट काम कर सकता है. तो पहले तो मैंने आइडिया को टेस्ट आउट किया. हाँ. देन फिर मैंने कहा इट्स अ गुड रिप्लेसमेंट फॉर श्योर इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड इन टर्म्स ऑफ वायबिलिटी. तो लोगों को ये डर लगता है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स इतने तेज़ नहीं चलते, हम इतने ऑर्डर्स कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. तो
मैंने बहुत बात करी, राइट, लाइक व्हेन आई वाज स्विगी राइडर वेयरिंग दैट स्विगी टी शर्ट, मैं लोगों से बस बात करता था कि इलेक्ट्रिक क्यों नहीं यूज़ करते, अरे नहीं इलेक्ट्रिक की स्पीड नहीं आती, इसमें अच्छा नहीं है, अच्छा रेंट क्यों नहीं कर लेते, उसमें ये प्रॉब्लम है, तो आई वॉज गेटिंग डायरेक्ट फीडबैक फ्रॉम द राइडर्स, मी बीइंग अ राइडर माई सेल्फ, करेक्ट, यस। राइट। एक होता है आप जाके सर्वे करो कि सर हम आपको एक हाँ, 200 उसमें वो रुपीज़ सोच कूपन के जवाब देंगे, देता है, हाँ इट्स सोच के नॉट एन जवाब देता ऑर्गेनिक। है, हाँ हाँ, ऑर्गेनिक जवाब नहीं होता, तो मेरे को ऑर्गेनिक जवाब में ले लोगों से। हाँ हाँ हाँ। दे नाउ केम आउट विद दिस आइडिया ऑफ लीज ऑन ओन प्लान, कि हम आपको लीज करेंगे व्हीकल, और उनके डर खत्म करो आप, कस्टमर का जो डर है आपके सोल्यूशन को लेके उसको आप खत्म करो। कहता है खराब हो जाएगा तो क्या करेंगे, राइट, हाँ, ऑफ कोर्स, चलते चलते दैट्स द चलते फर्स्ट चलते बैटरी खत्म हो गई तो क्या करेंगे, राइट, कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर तो ठीक करता नहीं है रास्ते में, हाँ राइट, तो दे हैड ऑल दीज कंसर्न्स, हाँ सो वी केम आउट विद दिस आइडिया ऑफ लीज ऑन ओन, रेंटिंग करेंगे यार, 2 साल हमें काम करना है, 2 साल के बाद तो रेंट जीरो हो गया हमारा, तो वी हैव लीज ऑन ओन, यू लीज इट फ्रॉम अस फॉर पीरियड ऑफ 2 years, राइट or whatever the time period is, and then you own the vehicle at the end of it. But we also saw कि इसमें attrition बहुत है, there's a huge attrition in last mile delivery. People test it, people work with these last mile delivery companies, they do not see that earning is enough, so they leave. हाँ तो इन दैट केस उनको फिर ये लगता है कि यार हम क्या करें, इसको तो कोई वैल्यू रही नहीं गई। हाँ तो विद दैट मॉडल आई केम आउट विद दिस मॉडल कि ठीक है कोई बात नहीं, मिनिमम लीज पीरियड इतना है, उसके बाद आप वापस करना चाहो वापस कर सकते हो, लेकिन आप लीज पीरियड पूरा करो तो व्हीकल आपका, और उस पूरे टाइम पे इंश्योरेंस मेंटेनेंस सब हमारा। अगर आपने वो मिनिमम लीज पीरियड पूरा कर लिया हाँ, तो व्हीकल आपका। मिनिमम नहीं, द मैक्सिमम लीज मैक्सिमम लीज पीरियड, मिनिमम लीज पीरियड के बाद आप दे सकते हो, आप वापस दे सकते हो विदाउट एनी चार्जेस। So like that whole model is very similar to how these furniture companies do it. हाँ, फर्नीचर वगैरह में एग्जिस्ट करता है। हाँ, एग्जिस्ट करता तो इसके अपने चैलेंजेस हैं, फर्नीचर आपका घर में ही रहेगा, वो एकदम से कहीं लेके नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। बट इसमें डेफिनेटली, बट आई लुक्ड एट अदर फिगर्स, ऐसा कोई डर हो गया यार कोटी को वापस ही ना करे तो मेरा तो ये मानना है, हमारे एक प्रोफेसर थे अनुरुद्ध देवभर बैप्सन में, तो उनका था, कहते हैं डू नॉट कम टू एनी कंक्लूजन्स, लुक एट डेटा। हाँ, तो मैंने डेटा देखा, अब आप क्या डेटा देखोगे, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को आप इसको समझो आप लोन पे दे रहे हो, करेक्ट, EMI पे दे रहे हो, तो आई लुक्ड एट द NPAs ऑफ टू व्हीलर लोन्स, हाँ, fair enough, that's तो दैट वाज अबाउट 1.7 to 1.9% फॉर वेरियस बैंक्स। हाँ आई टॉक टू, मेरे एम्प्लॉई था ऑलिस हेल्थ में, ही कम फ्रॉम गोरखपुर एरिया, हाँ कहते सर मेरे रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है मेरे ताऊ जी, वो ICICI बैंक के साथ टू व्हीलर लोन्स में है, वो रिकवरी में फ़ोन करते हैं, मैंने उनसे पूछो उनको कितने फ़ोन करने पड़ते हैं, कहते पिछले 3 महीने में उनको एक भी फ़ोन नहीं करना पड़ा है, वो रिमाइंडर के लिए फ़ोन करते हैं और लोग पेमेंट आ पेमेंट जाती कर है। हाँ, नॉर्मली पीपल दे डू नॉट पे व्हेन दे डू नॉट रियली हैव मनी, हाँ कोई चीट जनरली नहीं करता, हाँ। मैंने फिर ये किया जा सकता है। Sir, you mentioned research. You were a Swiggy rider for yourself for a good हाँ सर, duration. थैंकफुली ऑलिस हेल्थ जब बेची तो थोड़े पैसे आ गए थे जेब में तो इकोनॉमिक नीड तो नहीं थी, मैं वो फेक स्ट्रगल पीरियड नहीं बताना चाहता हाँ, fair enough, fair कि enough. स्ट्रगल कर रहा था, वो खाने के लिए पैसे नहीं थे और उसके लिए मैंने स्विगी राइडर नहीं, इट वाज प्योरली फॉर रिसर्च। So, if you're going so deep down that rabbit hole of research, I'm sure you must have done other research also. ये तो आपकी first hand research है, but you must have looked at other business models also, and you must have looked at. तो जैसे मैंने बताया कि मैंने कहा तो सोल्यूशन है, जो मेरे को सोल्यूशन समझ में आया, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हैं, पेट्रोल आई डिडंट वांट टू डू, राइट, बिकॉज अगेन सस्टेनेबिलिटी, तो मैंने कहा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स करने हैं, तो एक शॉर्ट टर्म रेंटिंग आ गया, हाँ, राइट, कि वीक के लिए करो 2 वीक के लिए करो। देन आई लुक्ड एट कंपनीज हु आर डूइंग शॉर्ट टर्म रेंटिंग, तो यूएस में एक बर्ड थी विच वाज द फास्टेस्ट यूनिकॉर्न टू बिकम, इट वाज फास्टर यूनिकॉर्न देन गूगल, फेसबुक, ऑल ऑफ देम, okay, right? Being in all Silicon right. Valley, it was the fastest unicorn of all the startups in US. And then I looked at Bounce in India. From a user's perspective, very good use case. Yeah. Like I had cousins who used to use Bounce in Bangalore and Hyderabad, but then I looked at the numbers of it. So मैंने देखा they were making huge losses. हाँ, Right? Bird के scooters were being destroyed by people for various reasons. Right?
तो फिर मैंने कहा कि यार ये बिजनेस ना फिर अपने पैसे से तो मैं करूँगा नहीं, राइट, लाइक बहुत दुख होगा, आपने इतनी मेहनत से पैसे कमाए हैं, हाँ आपने हाँ 4 हाँ, स्कूटर और कोई रेंट पे ऐसे दिए हैं एंड डंप कर पीपल आर दे डिस्ट्रॉइंग तो दैट, तो हाँ। फिर मैंने कहा शॉर्ट टर्म रेंटिंग डजंट वर्क इफ इट हैजंट वर्कड इन अ मैच्योर मार्केट लाइक यूएस। Bangalore and US हाँ and with people like, so the target market were people who you can say are middle class or upper middle class. या तो जब वो नहीं उसको ठीक से चला रहे, राइट, तो यू कैन नॉट डिलीवरी एक्सपेक्ट वाला दैट तो फ्रॉम हाँ हाँ डिलीवरी डेफिनेटली। वाला है, सी दोज पीपल आर स्ट्रगलिंग, या तो उनका काम है पैसे कमाना, तो हाँ मैंने एक सिंपल सोचा, इनेबल देम टू मेक मोर मनी, राइट, इनेबल देम टू मेक मोर मनी। वो उसी समय हो सकता है व्हेन यू हैव अ डिसेंट इनफ रेवेन्यू कमिंग इन फ्रॉम देम, दे ओन द व्हीकल, जब उनमें ओनरशिप आ जाती है ना, यार ये स्कूटी मेरी हो तो जाएगी, दे बिहेव तो डिफरेंटली। बिहेव वेरी डिफरेंटली, उनको लगता है मेरी स्कूटी है, ये मैंने राइट ईएमआई पे ली है, राइट। राइट। तो हमारे पास ऐसा नहीं है 3 महीने बाद 4 महीने बाद, फॉर वेरियस रीजंस, समटाइम्स उनको लगता है कि अर्निंग नहीं हो रही है, समथिंग हैपन्स इन देयर फैमिली बैक इन द विलेज, तो वापस दे के जाते हैं 4 महीने बाद स्कूटर। So how is that case different than short-term renting? तो अगर मैं आपको कहूँ, आई नो, ये लेट्स से माइक है, हाँ राइट, हाँ। आप सर एक हफ्ते के लिए लेके जाओ, राइट, चलिए, तो रेंट पे। माइक तो आप नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते, लेट्स से आप जूम कार्स में देख लीजिए, हाँ राइट, हाँ वो तो अच्छे पढ़े लिखे लोग रेंट करते हैं, उनको रेंटल्स हाई हाँ होते हैं, हाँ वो भी बहुत डिस्ट्रॉय करते हैं लोग, वो मेंटालिटी ह्यूमन मेंटालिटी है। हाँ मेरे को एक चीज़ केवल एक हफ्ते के लिए यूज़ करनी है, आई विल नॉट केयर अबाउट इट, हाँ। राइट, एंड ये केवल इंडिया का नहीं है, यूएस का, इट्स ऑल फ्रॉम माई पास्ट एक्सपीरियंसेस। सो माई फ्रेंड्स एट बैप्सन हु वर अमेरिकन्स, तो वो बताते थे कि व्हेन दे वर इन कॉलेज, राइट, लाइक when you're young, when you're 18, 19, Yeah. and कहते हैं once we took a rental car, a van, कहते हैं 10 of us friends, कहते we thrashed the car from inside, right, कहते हमसे क्या I can क्लिनिक फी तुम हाँ रिकवर कर लोगे, कितना right, they were the कर college लोगे। students, The right, college and student, yes. तो हमसे क्या तुम फी, विच इज़ मच मोर मैच्योर मार्केट, वो आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करते हैं, सब करते हैं, Correct. क्या Yeah. ठीक है $100 चार्ज कर लो, राइट, इसको हम 7 लोगों में बांट लेंगे, हाँ राइट, एंड हाँ दैट आप 2 दिन के लिए तो जब आप क्लीनिंग करवाओगे, आपके तो रेंट पे नहीं जा सकती ना वो व्हीकल। हाँ हाँ, So that's those what. experiences I remembered. So and how does why would a person who wants to do a short-term rent not take your model? Because we don't want that person here who wants a short-term. If तो I'm शॉर्ट टर्म understanding. रेंट में तो फिर चक्कर वो है ना, सिंस आपका चर्न बहुत है, एक हफ्ते के लिए आपने किसी को दिया, वो आपके पास वापस आया, पहली बात तो इसमें डैमेजेस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे, Correct. डैमेज नहीं भी है, हाँ राइट, फिर इट विल बी लाइंग आइडल फॉर यू फॉर मे बी 3 4 5 days, Yeah. राइट, वो चर्न बहुत होता रहेगा, हाँ सो योर आइडल टाइम ऑफ द व्हीकल वुड बी मच हायर। right. बट हमारे मॉडल में क्या है, वो लॉन्ग टर्म हम उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं प्रॉपर, हाँ राइट, एंड कि आपका 2 साल बाद, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द टाइम पीरियड, कि आपका हो जाएगा, राइट, यू कैन रिटर्न इट आफ्टर सो मच टाइम, एंड पीपल डू रिटर्न, ऐसा नहीं है। हाँ तो हाँ बट जनरली जब हमारा जाता है तो लंबे टाइम के लिए जाता है, एटलीस्ट 3 4 5 मंथ्स के लिए जाता है, सो आर LTV इज मच हायर, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर इज मच हायर, so cost of service is also less, our CAC is very low, so looking from the business perspective it is better। hyper growth की हम अगर बात करें तो we do not just give a vehicle just to show growth and just to show कि vehicle गया हुआ है, तो we have developed that, उसको आप मतलब उसको आप AI नहीं बना सकते, आई थिंक वो थोड़ा सा लर्नड बिहेवियर है। तो माई मैनेजर ही गोज, कितनी बार हुआ स्कूटर लेके गया है, कहता है सर ये ना सी लग नहीं रहा मेरे को, कि Oh, पे करेगा, that मैं ले आओ स्कूटी वापस ले आओ, okay, that human हाँ हाँ, दैट ह्यूमन human portion or human portion। तो the we have human made factor, sure yeah. even when we grow we have 1,000 vehicles, Yeah. we will still have that, कि हमारी टीम जाएगी, दे विल डिलीवर द व्हीकल, अगर उनको कुछ नेगेटिव लग रहा है दे विल नॉट गिव इट। So and it's very rare that people take into account these intuitional red flags. In this, जैसा आपने ही बोला, like you want to look at data, it's हाँ very difficult हाँ to leave that data aside and once just look at a person हाँ। and See, वही चीज़ होती है व्हेन यू हैव टू डेस्परेट टू ग्रो एंड कि नहीं हमें ये करना ही करना ही है, व्हेन यू आर चेजिंग नंबर्स यू मेक मिस्टेक्स, you make mistakes, yes. कि नियर दे दो यार क्या है, हाँ। एक हफ्ते को तो रेंट आएगा, 2 हफ्ते को तो रेंट आएगा, हाँ बट देन व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज यू माइट लूज द एसेट टोटली,
So numbers are at their place, but when humans are involved, there is that factor always. Human factor, I think you can never take out of any business, I believe. Every business is a human business. Right. अब जैसे आप ब्लिंकिट का हुआ था कंट्रोवर्सी, राइट? ब्लिंकिट इज़ अ बिग कस्टमर, हमारे बहुत राइडर्स ब्लिंकिट के लिए राइड करते हैं, आई थिंक दे गिव अ ग्रेट सर्विस. बट जब उन्होंने रिड्यूस करी अपनी डिलीवरी चार्जेस, एवरीवन वेंट ऑन स्ट्राइक. आप नहीं कर सकते बॉस. After a certain point, you cannot. You cannot reduce. You cannot reduce after a Just certain because you have to make your investors happy, you cannot do that. Yeah, that human factor has to be there. And for that matter, मेरे को जैसे ही आपने बोला ना, so I'm also a biker. Yeah. And I know now that you are also one. But I think this comes from that place also. जब मैं किसी दोस्त को बाइक चलाने के लिए दे रहा हूँ, so I always assess that person कि यार ये मेरी मोटरसाइकिल को कैसे रखेगा. Exactly. So I don't know, but does that come from there? Is there a connection there? नहीं, मैं तो खैर किसी को भी बाइक नहीं देता था. हाँ, बट दैट इज़ ट्रू. एक आध दोस्त को ही देता था जो पता था ठीक से चलाएंगे, बट आई मीन उससे नहीं आया. एक्चुअली इट वॉज मोर, इट केम फ्रॉम लर्न बिहेवियर. एंड KYC हमने नहीं करी थी, सो वी डिड लूज वन व्हीकल विच वी कुड नॉट ट्रेस. Okay. एंड बिकॉज KYC नहीं सही थी. This is out of how many vehicles that you Out have? of about 100, one. Okay, so I want to pivot and talk about like a lot of times we see nowadays people are like we are bringing something very innovative. Right. So what is your opinion about that? Like, is there really any innovative solutions, or it's just better way of doing it, or you know? So innovations, I believe, happen at many different levels. Huh. Innovation can be about a very pure tech. Huh. Now, is Google an innovative company? Absolutely. Absolutely. But what was their innovation? It was a search algorithm. Search was not their innovation. Alta Vista existed. Right. I remember the first search engine which I ever used was Alta Vista. Huh. Right? Google तो बाद में आया. Correct. So they were innovative in the search algorithm, which was amazing. Right? अभी तक कोई उसका replicate नहीं कर पाया है. iPhone, Apple did not invent a music player, but iPod was the largest installed base of all MP3 players. I think it was Sony who came out with the first MP3 player. Correct. So you don't have to be innovative being the first to launch a business. There can always be innovation in business models, in tech, anything. So, but yes, there has to be a certain innovation. If you're doing a startup, there has to be something unique that you're offering. And innovation can also be in the terms of building an ecosystem. Right? So what we're trying to do is we build an entire ecosystem. One stop shop for B2B businesses, for B2C clients who are in this, who are our customers. And it can also be in the level of service. Right? Why do people buy Toyota or Honda? Right? Like they never came out with a very high tech products. I mean, Honda had Ivy Tech, which I love, but other than that, क्या innovative ऐसा किया है उन्होंने, right? What is the quality of their product, right? That reliability that they come out with. Yeah, it's literally unkillable. So you can always build a business by providing a very consistently on your promise. ये हमारा promise है और हम पे consistently deliver करते रहेंगे. You can build a big business on that as well. Okay, and so what is, according to you, the innovation in Earthride? Innovation is this model. I don't think so that I'm sure there are some other companies who do that. I think it's the process, it's the level of service, and the innovation will come in the terms of the tech that we are building, the SaaS platform, right? Which is an integrated platform. Which let's see what other use cases can be other than ourselves. तो but yeah, innovation ऐसा कोई वो breakthrough innovation मैं नहीं कहूँगी. मैं Einstein हूँ और I am the first one to do this. तो उस deep level का innovation मैं नहीं कहूँगा, but it is the level of service, understanding of the customer, understand the customer's pain and solving that pain. Just by the way, do you remember how many kilometers you rode as a Swiggy rider? I don't know. That's just the biker inside me asking these questions. So average was about between 70 to 80 kilometers per day. Per day. That was per night, and that was I was doing in the evening.
So I would log in at about 6 or 6:30 in the evening and 12:30 तक log out करना होता था. So interesting thing which I found out was that like how the payouts happen and everything. So वो भी बहुत understand किया. That how the payouts happen. You would assume that the payouts based on the order कितने का है, right? You assume that अगर आप केवल एक 4 समोसाज लेके डिलीवर कर रहे हो तो शायद पे आउट कम होगा. अगर आप पे आउट किलोमीटर वाइज नहीं होगा, किलोमीटर वाइज होता है बट नॉट ऑन द ऑर्डर वैल्यू. नॉट ऑन द ऑर्डर वैल्यू. मेरा ये होता था कि अगर मैंने ज़्यादा खाना मंगवाया तो उनका पे आउट ज़्यादा होता होगा राइडर्स का. ओह राइट. ऐसा नहीं होता. बेस्ड ऑन किलोमीटर्स, बेस्ड ऑन टाइम दैट यू वेट फॉर देयर. सो देयर लॉट ऑफ वेरिएबल्स इन दैट. बट या. So why never again? We are talking last mile. That is what one of the problems we are trying to solve. We are talking last mile. We are talking enabling people to do that last mile effectively and with an economic benefit to them also. So why have you ever never thought about e-rickshaws or like three-wheelers, electric three-wheelers? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ई रिक्शाज का स्टार्टिंग पॉइंट मतलब इट्स लिटिल हायर. अगर हम उसके साथ देखें लिथियम आयन बैटरीज के साथ दे स्टार्ट एट अबाउट 3 lakhs प्लस. हाँ इजीली. तो टिकट साइज बहुत हायर था. हाँ सिंपल. तो ई रिक्शा आई डिडंट लुक एट इट बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि ऑलरेडी मैच्योर था वो बिजनेस. एंड उसमें क्या रहता है वो इसलिए प्रॉब्लम नहीं थी बिकॉज ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. There are already people who are renting out e-rickshaws in a very local area. Right? So I didn't see that a problem existing. Like वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी. मुझे ऐसा लगा कि अगर आपको ई रिक्शा चलाना है आपके पास सोल्यूशन अवेलेबल है. हाँ, कि आप जाओ, आप जिस एरिया में रहते हो, आप एक दिन पूछो, आपको पता चल जाएगा जी ये जना ई रिक्शा रेंट पे देता है. ई रिक्शा के लिए लोन्स अवेलेबल थे. टू व्हीलर्स के लिए लोन अवेलेबल नहीं थे. इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के लिए ई रिक्शा आपको बेचना हो तो आपको 2 दिन में कस्टमर मिल जाएगा. इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में नहीं था. अभी भी अवेलेबल नहीं है वो ऑप्शन. तो ई रिक्शा वॉज अ मोर मैच्योर इंडस्ट्री. Fair enough. Or I think Earthride is not your first stint as you. No. So this is my second startup, as I said. तो इसीलिए well, it does seem like a very well thought out process. Like somebody wants to take a pointer. This is a very wholesome process. Like the way you researched on it and the way you the way you did things. It's just right. So इसको pivot आप कह सकते हो, but pivots happened even before we bought our first fleet. That was because I was a second time entrepreneur. First time जब entrepreneurs थे तो pivots were happening on the job. Okay. Right, like we started with something. We started with school health programs at Allis Health. So my first startup was called Allis Health. बस we started with the school health program, मुझे उसमें अच्छा scope दिखा. We started that. We did a lot of school health checkups etc. फिर लगा कि नहीं market तो बड़ा नहीं है. People aren't ready to pay. Then I saw what else we can do. तो ऐसे pivot करते करते we came out with Allis Health, the final solution that we had, and it got acquired. And that was profitable. So it was not cash flow positive, but we did have a user base of about 1 million users. We did have a good product. Right. We had big insurance clients as our customers. So we had good data. हाँ. तो हमने तो अप्रोच किया था उस कंपनी को टू इन्वेस्ट प्री सीरीज ए कह लो. अच्छा. उसके लिए हमने अप्रोच किया था. But they really liked the product. They really liked the user base. And they had already built on something and they wanted to leverage our platform. Fit it as a module into their existing business. Correct. तो कहते हैं हम आपको एक्वायरी कर लेते हैं. How was that moment? When you heard that final figure and it turned out to be a very good. It was good. कि लगा हाँ चलो यार I can eat tonight. ये तो बुरा नहीं था, but हाँ it did take us out of the struggle. Like I was struggling at that time. Student loan था उस समय Babson का. How does that happen? How does somebody who's okay? In general मैं भी जब सोचता हूँ तो it's always like if I have some spare money which could sustain me for let's say 3-4 years, I would think of my own startup or at least think in that direction. But how is somebody who is in debt think of taking such a huge risk that I will do my own thing and even if I'm in debt it's fine, I'll go ahead. तो आपने कहा ना आप भी बाइकर हो और मैं भी बाइकर हूँ.
तो बाइकर और एंटरप्रेन्योर्स में एक चीज कॉमन होती है, हाँ दोनों पागल होते हैं। हाँ, वो एक स्विच होता है, वो तो स्विच एकदम से मतलब फ्लिप you are हो जाता crazy, है। like, हाँ 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 one हाँ thing हाँ, common is that you are crazy. आई नो तो आई नो। अब आप देखो, अगर आपके पास कार है, हाँ राइट, हाँ अच्छा कार एसी में जाओ यार, बड़ी बारिश हो रही, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आपको ट्रैवल करना है यहाँ से ऋषिकेश, यहाँ से दूर जाना है, गाड़ी में जाओ आप आराम एक से। एक्स्ट्रा दोस्त को डाल सकते हो, एक्स्ट्रा सामान डाल सकते हो। बाइक में यू हैव बिल्कुल। टू प्लान एवरीथिंग, Right. क्यों आप करोगे? अच्छी खासी जॉब थी आईबीएम की, सैलरी टाइम पे आती एग्जैक्टली, थी, हाँ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे, हाँ हाँ। राइट। क्यों करोगे आप स्टार्टअप? क्यों पागल है? बिकॉज तो द थिंग इज यू हैव टू सिक्योर योर फ्यूचर टू अ लिटिल बिट. हाँ I did work at Allis Health while I was still with IBM. ओके। But at one point, our founders were like, बस एक जने को तो फुल टाइम आना पड़ेगा. CTO had a family and everything. तो मैंने कहा नहीं, तू अपना जॉब कंटिन्यू कर, राइट, यू हैव मोर माउथ्स टू फीड. And also, like, business wise, I was the only MBA other than Chinmay, my co-founder. तो मैंने कहा नहीं, मेरे को ही आना पड़ेगा. बस I knew, like, funding, I could pitch to investors and all that. Considering that, I came full time after having saved for the next 6 months. तो before I left, 6 महीने पहले से प्लानिंग हुई थी कि सर बाहर जाना बंद, and all that. सारा सेव करते रहो. And when you moved to Allis Health full time, did you still have an education debt pending? हाँ, I still had education debt pending. तो वही सब प्लान करके हाँ हाँ। कि उसकी EMI जो जा रही है, And just 6 months. 6 मंथ के लिए प्लान करके मैंने कहा लीप ऑफ फेथ लेते. बट थैंकफुली हमें फंडिंग मिल गई वो मुंबई एंजल से. अच्छा, देन वी कुड ड्रॉ सैलरी एंड देन आई कुड पे माई बिल्स. Fair enough. It was not a very good salary, but हाँ. But हाँ. I didn't have to sleep hungry. Yeah. नहीं, वो था, वो प्लान करना पड़ा था. वो SIPs लगाए थे and we would travel in metros for meetings. Of course. I would take सुबह की 4 बजे की flight because they were the cheapest. They were the cheapest, of course. Stay with friends in Bombay, stay with friends in Bangalore. Of course. Right, like take the bus from Bangalore airport. Yeah, IBM में थे तो मेरी bit. कज़न ने कहा, मैं अपनी कज़न क्या जा रहा था, कह रही है वो बहुत महंगी है, बहुत दूर है एयरपोर्ट. मैंने कहा यार, मैंने कैब लेते हैं. कोई नहीं, 900 रुपये का बिला रहे, कोई नहीं, सैलरी तो आ जाएगी. सैलरी तो आ जाएगी. तो अब जब एंटरप्रेन्योर बन गए हाँ. तो नहीं कर सकते ना. तो फिर बस में बैठ के जाओ और क्या. बट those were fun times, right? Like, I'm sure. हाँ. ठीक है, I mean it's part of the journey. But okay, so this is fun times in hindsight. I'm sure जिस दिन आप उस बस में बैठे हुए हो, there would be moments you'd be like, यार, this is so annoying. I'll say not really. I'll tell you why. So by God's grace, भगवान की कृपा है कि I did not grow up in poverty. Like, आजकल बहुत हो गया है ना. हाँ. स्ट्रगल देश बताने का बड़ा, और हाँ. नहीं, मैं ऐसे करेंगे नहीं भी. It will be a disservice to my father. Yes, absolutely. So my father is also an entrepreneur. Okay. So he had his struggling days, but we never felt that. हाँ. Yes, we were not super rich. Yeah. Right, like, but we were comfortable. Right, like, in the sense that we didn't have a Audi or Mercedes, we still do not do. Right, but हाँ, Maruti 800 थी घर पे. Right, so that ways, I'll say I was comfortable. Never had to sleep hungry. तो हुआ क्या, मेरे डैड ने मेरे को पहली बार जब दिल्ली भेजा अकेले, हाँ. इट्स इंटरेस्टिंग स्टोरी. 10th के बाद ना, मैं पढ़ाई तो कुछ कर नहीं रहा था. 10th में डिसेंट नंबर आ गए थे, पता नहीं कैसे आ गए थे. 10th में डिसेंट नंबर आ गए थे. मैंने कहा मुझे कुछ मत भूलना, मैं मस्ती करूँगा. तो माई ब्रदर वॉज एट होम स्टडिंग फॉर हिज फाइनल एग्जाम्स. ही वॉज इन कॉलेज. Okay. एंड मैं घर पे पूरे दिन मस्ती करूँ, टीवी देखूँ करूँ. मम्मी ने कहा ये तू उसको तंग कर रहा है, तू रायबरेली चला जा चाचा के पास. सॉरी, रायबरेली से दिल्ली आ जा चाचा के पास. ठीक है. तो यहाँ पे दादाजी, दोनों चाचा वगैरह थे. तो मैंने कहा पापा मेरी एसी में टिकट करा दो. नहीं, तुम स्लीपर से जाओगे. आई वॉज जस्ट पास क्लास 10. आई वॉज ऑल 15 years old. मोहम्मद लाइक एसी में करा दो बेचारे का, पहली बार अकेले जा रहा है. नहीं, एंड आई एम आस्किंग हिज ब्रदर. मैं उसको बोल रहा हूँ कि पिक नहीं करने आएगा तुम्हें. This is which year? This is which year? 96, हाँ. So this is that time when AC used to be a thing. Used to be a thing, हाँ. Yeah. This is that So time. I knew my dad can afford AC. Yeah. But
नहीं मैं स्लीपर से भेजूंगा तुम्हें, और मैं तुम्हें ऑटो के पैसे नहीं दे रहा, हाँ, राइट, खुद मैनेज कर। बस से जाओगे तुम। अच्छा। हाँ नहीं खुद नहीं, बस हाँ से हाँ जाओगे, हाँ। इस साइड निकलना एंड फिगर आउट कि कौन सी बस जी के जाती है। बट माई अंकल केम, न्यू मम्मी ने फ़ोन कर दिया कि नहीं भाई बच्चा 50-15 साल का आ रहा है, बट माई अंकल शोर्ड कि यहाँ से बस मिलेगी और नेक्स्ट टाइम मैं नहीं आऊँगा लेने। ओके। तो आई थिंक इट केम फ्रॉम दैट। तो आई वॉज टॉट दैट थिंग, द वैल्यू ऑफ मनी, कि यार कभी भी स्ट्रगल पीरियड आ सकता है, राइट। एंड माई फादर हैड ऑल्सो गॉन थ्रू दैट, कि ही हैड लेफ्ट अ वेरी हाई पेइंग जॉब इन दिल्ली, a private job, like for its time in For his 83, time, yeah. and a well paid job, and he started his factory in 83 84, and In मम्मी कहती हैं Raebareli. कि हाँ, and कह रहे 2 साल मम्मी कहती है we didn't buy any new clothes or anything, right, so but ठीक है, looking back it feels like struggle but it's part of the journey. So I think was that training, feel तो होता था, working as a consultant with IBM, even when I was pre MBA job जो मेरा Siemens का था, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप शताब्दी से उतरोगे टाई पहन के, हाँ हाँ, these are अभी companies कैब that really वेट कर take रही है, care. यू जस्ट Yes. गेट इनटू द कैब, Yes. आप जस्ट हो गए, जा रहे हैं, CXO से मिल रहे हैं, हाँ क्लोजिंग करोड्स की डील, हाँ राइट, जाओ ट्रैवल बिल दो, एंड यू डोंट टू वरी अबाउट एनीथिंग। yeah. बट या वो फील होता है, बट इफ यू आर नॉट रेडी टू डू दैट, यू आर नॉट रेडी टू बी एन एंटरप्रेन्योर, राइट। I think this is one thing, like it's although yes, there are entrepreneurs that come from families where everyone is into services or everyone is into salaried employment. But this is a thing, like when you have if your father is an entrepreneur, it kind of becomes I wouldn't say easier, but it kind of becomes a more open, more familiar line to get into it. But is that so? Actually, it's contrary to that. Oh, So I'll be okay. very frank. So when I got through DCE, Huh. my dad was very happy, of course, for two reasons. It's a very good institute, no doubt. Second of all, फीस बहुत कम थी, तो मेरे डैड वाले मेरे बहुत पैसे बच गए। हाँ नहीं तो निकम्मे को प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाना पड़ता, मेरे बहुत पैसे खर्च कर होते, तो माई डैड वॉज वेरी हैप्पी कि फीस बहुत कम है। तो एंड देन व्हाट हैपेंड वाज, माय अंकल ही वाज वर्किंग एट अ वेरी सीनियर पोजीशन इन सीमेंस, एंड आई कुड सी हिज लाइफस्टाइल, एंड माय डैड न्यू हिज स्ट्रगल्स, कि भाई रोज बिजनेस ढूंढो, रोज लॉ, कभी पेमेंट नहीं आ रही, एंड द स्ट्रगल्स विद द बिजनेस, राइट। सो ही न्यू अबाउट द स्ट्रगल ऑफ अ स्मॉल बिजनेस, राइट, कि इट्स नॉट ईजी। तो मेरे पापा का यही था कि यू आर एट अ गुड इंस्टीट्यूट नाउ, व्हेन यू ग्रेजुएट गेट अ गुड जॉब, एंड इट्स फार ईजियर अ प्राइवेट जॉब, राइट, कि एक प्राइवेट जॉब हो विच इज स्टेबल विद अ गुड कंपनी, यू गेट गुड एक्सपीरियंस, यू मीट गुड पीपल and a good money, right, and because he saw around him, तो डैड को था कि बिजनेस मैन की कोई ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यू विद योर जॉब। तो द कॉन्ट्ररी था वो, इट वाज काउंटर इंट्यूटिव, बिकॉज वे एंड इट सीरियसली, बिकॉज 2003-4 बिजनेस का मतलब था कि अपना पैसा लगाओ, बैंक से लोन लो, एंड यू स्ट्रगल एवरी डे टू पे द बैंक लोन, एंड कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा है, कैन नॉट डू एनीथिंग। अब तो NCLT वगैरह आ गया है, राइट, MSME रजिस्ट्रेशन आपको NCLT वगैरह का फ़ायदा हो जाता है, बट उस समय नहीं था। So that struggles used to be there, right? The Indian economy was not so huge that there are so many opportunities in business, small business. Right. Because nowadays you hear like 9 to 5 is a bad thing. 9 to 5 is like you need to get out I of love 9 to 5 to 5. be, to be somewhere in life. You need to get out of 9 to 5 is what everyone says everywhere. I love 9 to 5. दे दो यार मेरे को जॉब, एक 9 to 5 वाला, decent salary दे दो मेरे को कोई। But I love 9 to 5. Like I think ये थोड़ी गलत धारणा बन गई है, बहुत गलत ये मैसेज कुछ लोग दे रहे हैं, कि 9 to 5 is bad. Like I do not hate any of the companies. Like I learned a lot. I had बहुत काम किया. Like my first job at Schneider, I was working 7 days a week, but I learned a lot. And I had money in the bank, which I loved, क्योंकि खर्च करने का टाइम ही नहीं था। So money is always there is motivation coming out of money also, always, whether it's your own thing or it's a 9 to 5 thing. Money has to be there, right? You have to eat, you have, at a certain age you develop a lifestyle, and I mean money is the most important thing. मतलब शाहरुख खान का एक डायलॉग है which I completely agree with, कह रहे don't be a philosopher unless you have made money, right? I totally agree. That guy is charming, and he gives some really nice bits of
ज्ञान like that. So no, it is true. You cannot become a philosopher Until you unless have you it, make, yeah, unless you have money. to say that money is not everything, you need a lot of it in the first place. Definitely. तो मेरे ऐसे हम लोग बैठे थे कुछ फ्रेंड्स कि यार कितना पैसे कमाना तुझे. मैंने कहा इतना ताकि मैं अपने को कन्विंसली कह सकूं कि मनी डजंट मैटर, राइट. हाँ कि now for me money, any more money doesn't matter. हाँ. And it's मेरे को always इतना very पैसे कमाने कि very मैं contextual. कि मैं कह सकूं कि मनी डजंट मैटर, मैं फिलॉसफी झाड़ सकूं. इतना पैसा कमाना है. हाँ रेडी वही बंदा कहता है जिसके पास पैसा होता है. हाँ. और इतने पैसे के लिए हमें और कितने entrepreneurial successful entrepreneurial ventures आपको करने पड़ेंगे. तो there must be some long term vision. I'm sure. लॉन्ग टर्म विजन तो है. सी इट्स लॉन्ग टर्म विजन तो फॉर श्योर है, बट नॉर्मली दैट long term vision doesn't work out the way you intend to. You keep pivoting and you end up somewhere else. Something else happens. Happens. But long term vision यही है कि next 5-6 years में at least इतना हो जाए कि personal wealth, एक है valuation of a company, personal wealth इतनी हो जाए that it not have to work for money on a personal front. Right? Rest of the life, I do not have to worry about where my next meal is coming from. For the rest of my life, because then what happens is once you have that comfort, you can take risks in life. You can take risks with your startup. You can you can try new things. तो वो बस है एम, पर्सनल एम ये है. और अब अर्थराइट का तो ये एम है कि सर्व एज मेनी पीपल एज वी कैन. कोई 5-10 साल का ऐसा कुछ विजन भी होगा अर्थराइट का? आई मीन एम तो ये नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में करने का है. अगर 5-6 साल भी हो जाएंगे तो क्या कहाँ पहुँचना है 3-4 साल में? Like being the largest company in this industry, in this sector. But I don't think there are a lot of companies in this sector. Also, a lot of companies have exited this business. They were doing leasing, renting. Yulu falls in this sector. But they are into micro mobility. They started with micro mobility, that last mile connectivity using micro mobility, but they have come out into this renting their vehicles to the riders. Is that a serious competition? Yes and no, because in volume obviously they are much bigger, but we have a lot of customers who were riding Yulu but they use our vehicles because they're far more comfortable. We can do more kilometers on the vehicles that we give, and you get ownership at the end of it. So that factor is always there. And a lot of companies who are in this industry, they have become delivery companies. Correct. So pure play lease, ownership based leasing, I don't think so any company is doing. And we just want to go to an all India level. So scaling up is an issue with EVs for several reasons. Just raw material hai, they require a lot of rare earth materials, especially in battery. Right? अभी आप देखो इंट्राइजेशन ज़रूरी है because of the FAME 2 and the FAME 3 subsidy. अब उसकी पॉलिसी आई नहीं है FAME 3 की, but you need production in India. So there were not a lot of companies who were doing motors and controllers. Cells अभी कोई कर ही नहीं रहा है. There are plants coming up. So and the raw material, and it's highly controlled, right? Like lithium ion. I think 80% or something of lithium mines are owned by Chinese. ओके. तो वो इकोसिस्टम इशू थोड़ा है. अगर आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जाओ तो वो स्केलिंग अप में वो थोड़ा सा इशू है ईवीज में ओवरऑल. उसको एक बहुत स्केल पे लाने के लिए उसको जो रेयर अर्थ मटेरियल्स का जो प्रोडक्शन है वो इतना नहीं है. आई बिलीव, आई नॉट सीन द नंबर्स, बट आई थिंक दैट इज वेयर. एंड द प्रोडक्शन गॉट अफेक्टेड हाईली जब ये सेमीकंडक्टर इशू आया था. द यूज ऑफ सेमीकंडक्टर एज अ परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ द व्हीकल इज मोर in an EV than in a regular, right? It's all electronic. Correct. Absolutely. Right? Like एक ICE vehicle में block होता है, cylinder होता है, piston होता है, and they're all metal. all right? Common metals. और common metals, right? वो आप recycle भी कर सकते हो बहुत easily. Recycling exist करती है. अभी इनकी recycling इतने level पे नहीं है. आपकी spent battery अभी इतनी नहीं है. Right? Like अगर हम electric 2-wheelers की बात करें, अभी बहुत कम ऐसी बैटरीज हैं जो अभी रिसाइकिल के लिए आई हैं. द वॉल्यूम इज़ नॉट दैट बिग. तो वो अभी स्टेज नहीं आई है. तो वो अभी पूरे इकोसिस्टम में मैच्योर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट फ्यूचर्स तो ईवी ही हैं. बट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस मेरे को कभी कभी आई ऑल्सो फील कि द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ मेकिंग एन ईवी, I think it's a myth. It's a myth. I'll tell you why.
Okay. So what happens is EVs are fighting a very rich and a lobby industry. Automotive Oil and industry. gas. No, not Acha, automotive. oil and gas Oil also, and gas. yes. Oil and gas. Oh, yes. Right. Oil and gas industry को fight कर रहे हैं, which have a lot of money, like They do. billions of dollars. Yeah. They are the And richest people. they have a huge political influence. Absolutely. Right. So what happens is they talk about in media and everything, oh that you कि आप यहाँ पे लिथियम को माइन कर रहे हो, फिर आप उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, फिर आप यहाँ पे बैटरीज बना रहे हो, फिर वो बैटरीज व्हीकल में डाल के यहाँ शिप हो रही हैं, फिर वो यूज़ हो रही हैं. बट व्हाट दे डोंट टॉक अबाउट इज ऑयल आपका माइन हुआ है, आपका निकाला गया है अर्थ से, सऊदी अरेबिया में, इराक में, ईरान में, वो डीजल पावर्ड शिप्स में लोड होता है, फिर कहीं जाता है, इंडिया फिर आता प्रोसेस है, होता यूएस है. जाता है, कनाडा जाता है, यूरोप जाता है, अफ्रीका जाता है, राइट. आपके पोर्ट पे आया, इट्स गेट्स लोडेड इनटू बिग ट्रक्स, राइट. द क्रूड ऑयल राइट. गेट ट्रांसपोर्टेड टू द रिफाइनरी. राइट. वहाँ पे उसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत हाई है ऑफ द रिफाइनिंग. राइट. वो फ्री में तो हो नहीं रहा है, ऐसा तो है नहीं कि जब रिफाइन कर रहे हो आप पेट्रोल तो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है. राइट. देन दे गेट लोडेड ऑन टू अदर अगेन अ डीजल ट्रक, गेट ट्रांसपोर्टेड टू अ डिपो. राइट. आपका सीधा आपको पेट्रोल पंप पे नहीं आता है. राइट. So it gets transported to a depot which is outside of the city, which stores lakhs and lakhs of liters of petrol, diesel, अलग अलग. Transported to the point Then of diesel sale. वाला डीजल के ट्रक में आएगा, पेट्रोल वाला पेट्रोल के ट्रक में आएगा at your local petrol bunk. तो आप उसका कार्बन फुटप्रिंट पे तो देखो. And now every time that you fill up your vehicle, that every liter of diesel or petrol goes through that entire process of transportation, starting right from Middle East or Russia. आप उसका कार्बन फुटप्रिंट देखो ऑफ एवरी लीटर ऑफ योर फ्यूल. बट विद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट, अब शेयर ऑफ रिन्यूएबल्स इज इंक्रीजिंग इन आवर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. राइट. इंडिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट शेयर्स ऑफ रिन्यूएबल्स, renewable among electric most developed, if not developed, but one of the larger economies. The share of renewables is quite good in India. एंड ऑल्सो अगर आप कोल की भी बात करो तो कोल आपका कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी होती है, आपका ईएमएफ लगा होता है वहाँ पे फैन. द कोल पावर प्लांट ऑफ टुडे इज मच क्लीनर देन इट वाज many years ago. राइट. तो अगर आप पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखो तो उसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम है. एंड नाउ व्हेन दैट इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड, उसका कार्बन फुटप्रिंट जीरो है. वो तो ट्रांसमिशन लाइन लगी हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन लगा हुआ है. राइट. उसमें तो जीरो कार्बन फुटप्रिंट है. राइट. पहले बहुत लॉसेज होते थे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, अब तो इंडिया में वो भी बहुत कम हो गए हैं. तो दैट वेज तो इट्स अ वेरी एफिशिएंट प्रोसेस ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी टू योर होम. सो दैट वे अगर आप ओवरऑल लाइफ साइकिल की बात करो तो ईवीज आर स्टिल अ लॉट मोर क्लीनर. एंड ऑल्सो व्हाट हैपेंस इज आपका जो पेट्रोल व्हीकल है वो आपके घर के सामने पोल्यूशन एमिट कर रहा है. राइट. I mean, यहाँ पे वो आपका जो पोल्यूशन हो भी रहा है, कोल में अगर हो भी रहा है, पहली बात तो काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी है. आई थिंक अबाउट 30% कमिंग फ्रॉम रिन्यूएबल्स, आई थिंक 50% प्लस, which is a huge. राइट. सनशाइन किया ना आपकी गाड़ी चार्ज हो रही है. राइट. तो बट दूर हो रहा है प्लांट. राइट. एंड वहाँ पे भी आपके कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी लगी हुई है. लाइक क्लीन बर्निंग कोल आ गया है. राइट. एंड आपका वो जो फिर फ्यूम्स निकल रहे हैं उसके लिए भी ईएमएफ फैंस वगैरह लगा रखे हैं. Absolutely, yes. तो दैट वे इट्स मच क्लीनर ओवरऑल. नंबर्स आप रन करोगे, ईवीज आर क्लीनर. EVs are cleaner. हाँ. अगर आपको फ्यूल का Including the production of the car. इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ द कार उसका थोड़ा सा ज़्यादा है. बट अगर आप देखो एवरी पेट्रोल फ्यूल, आप एवरी लीटर ऑफ फ्यूल का आप ट्रांसपोर्टेशन कार्बन फुटप्रिंट देखो ना, जो आप कार में डाल रहे हो, डीजल का जो डाल रहे हो. Of course. राइट. एंड प्लस एफिशिएंसी तो गिरती ही है आपकी ICE व्हीकल्स की. That is one thing that has always bothered me. Even the best ones are like 35-40% efficient tops. Right. Like rest of the energy is just wasted. Right. तो वही चीज़ है कि will EVs 100% replace ICE? Will take a while for it. But as far as vehicles being used for making money is concerned, EV. it has to be EV. Commercially, EVs are way more sustainable. Way more sustainable.
because doing more kilometers per day. So okay, this makes me think Zomato, Swiggy, a lot of these guys, Paytm for that matter, they have a very deep data on their customers. हाँ. But I also feel somewhere down the line they all have the same customers. That top 4-5% of the people, Right. They all have. They are all Right. catering to that very small Exactly. section. Correct. That is true. Right. And there's a very big section that is quite unexplored in terms of their purchasing behavior and whatnot. Right. So somebody who's going to lease a two-wheeler EV for last Right. mile delivery might not be ordering a lot on Swiggy, Zomato, and Right. maybe using Paytm, but not doing that much of spending. Correct. So and what I see from what you are saying, on that same segment जिसके बारे में ज़्यादा डेटा और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हाँ. उस पे आपके पास में एक बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है. हाँ. Like you can Right. tell कि whether मतलब you can vouch for that guy whether he can return the money or not. So you have a very deep understanding. Right. And in today's day and age, data is the king. Right. When you really look at it. So you've never thought about recording this understanding over whatever parameters you can work out, but recording कि भाई ये 5 फैक्टर है, अगर कोई भी बंदा ये 5 फैक्टर पे फिट होता है, हाँ. भले ही वो मतलब these फैक्टर्स हो सकता है आपको ये 5 फैक्टर देख के you cannot assume this, हाँ. but somehow अगर ये 5 फैक्टर हैं तो that guy has got a very good propensity of paying you back or he's got good moral values. This is a huge No, data तो mapping आप if you कह रहे really हो look ना, at it. so इसको अंडरराइटिंग भी आप कह सकते हो, काइंड ऑफ. हाँ. कि यूजर पेमेंट बिहेवियर नहीं वो हम ट्रैक करते हैं. तो व्हाट वी डू इज वी सी व्हाट इज सो वी हैव डेवलप्ड एल्गोरिथम वेयर वी सी कि कौन डिले मतलब कितना डिले हो रहा है, क्या हो रहा है, व्हाट इज द टाइमली पेमेंट शेड्यूल एंड ऑल दैट. तो वी डू हैव एन एल्गोरिथम व्हिच टेक्स दिस इनटू फैक्टर. तो इस पूरी चीज में एंड ऑब्वियसली दैट एल्गोरिथम विद मोर डेटा विल गेट मोर मैच्योर. हाँ. तो मशीन लर्निंग के साथ में. Fair. तो बट वी हैव डेवलप्ड आप रिग्रेशन एनालिसिस कर लो या कुछ कर लो, बट वी हैव बेसिक मॉडल की मैथ की बात करें तो. हाँ. एक तो आप कहोगे नॉन मैथ पार्ट ऑफ इट. करेक्ट. राइट. लाइक मैं आज आपको कह सकता हूँ कि अच्छा आप एक 3 लाख की बाइक खरीदना सोच रहे हो. हाँ. राइट. आप इस 3 लाख को निफ्टी में लगा दो और आज से 5 साल बाद ना आप डुकाती ले पाओगे और 6 साल बाद आप डुकाती ले पाओगे. हाँ. मैथ वर्कआउट करेगी. मेरे को ऐसा लग रहा है आपको कोई दे चुका है ये मैथ ऑलरेडी. नहीं, आई सी दैट ऑन इंस्टाग्राम ना. लाइक मेरे को तो दे, मैं उसको बताऊंगा, बट नो आई बिलीव इन दैट मैथ. आई कंप्लीटली बिलीव. आई डू बिलीव यू हैव टू इन्वेस्ट. यू नो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स आई डू नॉट स्पेंड माय मनी ऑन एट ऑल. लाइक बट फिर वो यूजर बिहेवियर भी तो है यार. बंदा जिए नहीं क्या? आई मीन लाइफ इज नॉट ना कि आपने SIP करी है एंड 60 साल की उम्र में आपके पास 10 करोड़ है ना आप मर जाओ. लाइक टाइम थोड़ी है आपके पास. सो यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस. यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस. तो वही वाली बात है. देयर इज अ मैथ पार्ट ऑफ इट बट देयर इज आल्सो नॉन मैथ पार्ट ऑफ इट. Right. देयर इज आल्सो दैट अंडरस्टैंडिंग दैट बिहेवियरल पैटर्न. राइट. वही तो सबसे मुश्किल है. मेरे को हाउ डू यू रिकॉर्ड दैट? वो जो एक फाइनल बंदा है जो फाइनल स्कूटर डिलीवरी के लिए गया है एंड ही इज गोइंग टू डू दैट मोस्ट क्रिटिकल लास्ट असेसमेंट ऑफ दैट. हाउ डू यू रिकॉर्ड दैट? इट इज अबाउट दैट पर्सन, वेयर यू आर हायरिंग दैट पर्सन फ्रॉम, what that person's behavior is. आपको जो employee is, that is why finding the right employee is very important. Like where is that employee coming from? What is his background? Right? कि उसको कभी पेन हुआ है ऐसा? Like has he interacted with such people in the past? अच्छा, पैसा दिया है और वापस नहीं आया उसके पास. This type he has an understanding on like every day he sits around with such people. हाँ. Right? हाँ. आप कहो जी मैंने तो जी IIM से रिक्रूट कर लिया है बंदा. IT IIM है ये, पेडिग्री. इसके फादर भाई साहब IAS ऑफिसर थे. ये ट्यूशन क्लासेस भी लाल बत्ती में जाता था. यू विल नॉट नो व्हाट अ स्विगी राइडर थिंक्स. उसका पेन पॉइंट नहीं समझ में आएगा उसको. नहीं समझ में आएगा. राइट. हाँ. तो वो नहीं वो कॉल ले पाएगा. ये कॉल तो वही आदमी ले सकता है जो इन लोगों के साथ में बैठ के पत्ते खेले हैं और ये देखा हमको पत्ते खेलते. हाँ, उनको देखा है पत्ते खेलते हुए. हाँ. अगर पत्ते खेल रहे तो उसको हम नहीं देंगे स्कूटी. हाँ.
जो वो साइड में खड़ा है कह रहा है आज से खेले, अरे नहीं भैया मैं अपने ऑर्डर की वेट कर रहा हूँ, हाँ राइट? they've seen their behavior Their behavior. they've seen behavior like that in real life. So that- But there has to be some way of recording this intelligence, because otherwise you cannot duplicate. अपने को हर बार हाँ नहीं नहीं, अगर आपको स्केल करना ही है, देयर शुड बी अ सर्टेन वे टू रिकॉर्ड दैट. because a lot of times these So- people do it quite successfully. So the thing is, वो at scale फिर वही आएगा. It has to be a little region specific. Bro, we are going to launch a franchisee model very soon. Okay. And this is the first time that I'm talking about it. तो what will happen is, ये local level पे ना ये intelligence exist करती है. हाँ this local intelligence is Local it's intelligence. there. So we'll be finding entrepreneurs, micro entrepreneurs in tier 2, tier 3 cities, even tier 1 cities. And we'll be building franchises over there. So that there's a local ownership. And they know the local behavior. So that local Right. intelligence that person will have. Right. अब मुझे जयपुर का नहीं पता, मेरे को वी गट फॉर सम रीजन आवर वीडियो गॉट वेरी पॉपुलर इन राजकोट एंड ऑल. अच्छा. हाँ, तो वहाँ से हमारे पास बहुत कॉल्स आ रहे हैं. मेरे से कह रहे सर राजकोट से बहुत कॉल्स आ रहे हैं. मैं चलो राजकोट में करते हैं नेक्स्ट लॉन्च. तो वी गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स फ्रॉम महाराष्ट्र ऑल्सो. हाँ. तो वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ डिमांड फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. एंड सो वील बी गोइंग विद अ फ्रेंचाइजी मॉडल, बिकॉज वहाँ पे जो पता है उस सिटी में, उसको पता है कि सब रीजन में कहाँ पे क्या यूजर बिहेवियर है. वो इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करती है. वहाँ पे एक जो लोकल छोटा बिजनेसमैन है, उसकी छोटी किराने की शॉप है, लोकली वो डिस्ट्रीब्यूटर है, लेट्स से एफएमसीजी का, which are actually pretty big players. They are pretty big player in tier 2 towns. They are So some of the our largest franchise players. model is such that such entrepreneurs can also become entrepreneurs with us, and they can make a pretty decent amount of money. Okay. We've been talking about Earthride. At the back of my head, it has always been कि सर इसके पहले healthcare tech, Yeah, and then you've come to EV. right. इसको तो मैं फिर भी एक बार relate कर पा रहा हूँ कि हाँ ठीक है, you're also into two-wheelers, हाँ. and it's a need that you've seen around you and you're trying to work on it. Healthcare tech was something built for, if I'm not wrong, it was a product built for outside of India. No. Domestic. Allis Like Health- our Allis Health solution was- was available. It was built on an international model. Okay. But it was built for India, but we were planning to expand Southeast Asia and actually developing market. Okay. But ठीक है, वो भी इंडिया लेवल पे ही थे, and they must have gone. So okay, if I want to ask this question, all right. So let's say hypothetical. Let's say today somebody gives you whatever you want for Earthride, हाँ, right. and you hand over Earthride to that person. हाँ. I'm sure a lot of people say this is my child, so I won't give it. हाँ. But for a Let's hypothetical, assume, हाँ. let's assume. So what next now? Will you be open to a full-time employment and entrepreneurship, both, whatever opportunity comes out the best, or would you be looking at a certain direction? क्योंकि मैंने देखा usually you have 2 successful stints. Right. So now I'm sure when you look around you would see opportunities कि हाँ यार कल को कुछ करना है तो ये भी किया जा सकता है. This is another thing. Maybe something in AI, हाँ. because that's a new thing. But AI to solve a real life problem. हाँ. So I always believe catering to since I came from a small town, and we used to live in the same campus as our factory. Like growing up, our factory wall and our house wall was the same. हाँ. तो अगर वो फैक्ट्री की आवाज़ आती रहती थी पूरी रात. Correct. And you just grow accustomed to it. हम जो मेरे वर्कर्स थे, पापा के फैक्ट्री में वर्कर्स थे, हम उनको भैया बुलाते थे, एंड आई ग्रू अप विद देम. आई नो देयर एस्पिरेशंस. मेरे को हमेशा से रहा है कि यार इनको कैसे केटर कर सकते हैं, राइट, हाउ टू मेक देयर लाइव्स बेटर. तो उसी में लाइक हाउ कैन मे बी AI हेल्प द बॉटम ऑफ द पिरामिड, इफ नॉट बॉटम ऑफ द पिरामिड, द वर्किंग क्लास. Because that is where the meat is, right? Nobody is addressing those people. Yes, you're right. That is where all the meat is in India, हाँ. especially. Yes. तो अब आप हमने पढ़ा था आई थिंक MBA में या कहीं, there are 2 ways to there are many ways of having a $1 billion turnover. Either sell one thing for $1 billion, right? Or sell $1 billion things for $1. Yeah, for $1 to a billion people. Yeah. Right. So that is what Jio has done. Yeah. Right. हाँ. Like Jio has really enabled Yes. the masses. Yes. अब आप लाते रहो प्रोडक्ट्स, इनोवेट करते रहो, बट उन्होंने एक प्रोडक्ट देखा, डिलीवरिंग ऑन दैट प्रोसेस. सी, Yes. यू हैव टू डिलीवर ऑन द
promise that you are making. I think the startups or companies fail when in the view of hyper growth and you get used They're to not this able to media deliver and on you their know the commitments. fancy schmancy, when you stop delivering on the promise that you made your, On to the your first customer. हाँ, that is the benchmark. Like हाँ, अब क्या आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है? हाँ, लाइक ऐसे एग्जांपल है लाइक हीरो मोटो कॉर्प, राइट? हाँ, सर रिलायबल फ्यूल एफिशिएंट कार लेकर जाओ, कहीं नहीं जा रही. हाँ, कोई अनसेटल नहीं कर सकता स्प्लेंडर को उसकी पोजीशन से. नहीं कर सकता. लॉर्ड सबने स्प्लेंडर एड़ी इज चोटी लॉर्ड का जोर स्प्लेंडर. लगा लिया, कोई नहीं कर उसे सकता. उठा सकता. नहीं लॉर्ड कर बाइक सकता. है वो, हाँ, राइट? इट इज लॉर्ड. तो क्यों? बिकॉज दे आर कंटिन्यूइंग टू डिलीवर ऑन दैट प्रोसेस. वो कितने उसके वर्जन आ जाए, दैट वन प्रॉमिस डजंट गो एनीवेयर. दे विल कीप डिलीवरिंग ऑन ऑन इट. दैट प्रॉमिस. हाँ, फ्यूल एफिशिएंसी एंड इट विल नॉट ब्रेक. इट विल नॉट ब्रेक डाउन. हाँ, कीप डिलीवरिंग ऑन द, डोंट ट्राई टू बी वेरी फैंसी कि सर हम ये कर दें उसमें वो कर दें. आज भी टाइम वही दिखता है जो आज से 50 साल पहले दिखता था. आज भी इंजन वैसे फ्रंट माउंटेड है एंड यू नो, तो वही चीज़ है. लाइक कीप डिलीवरिंग ऑन द प्रोसेस, कीप स्मॉल इनोवेशंस अहेड एंड ऑब्वियसली change with times a little bit. But वही है, keep delivering on the promise. keep delivering on the promise. Right? Even if they start selling electric more than the petrol vehicles, reliable, and you get the range that you're promising. Yes. But yeah, keep delivering on the promise. Be it any, like be it a, you know, like we are talking a lot about because of my industry this, but anything. Even if it's your software product. So what was your promise with Allis Wealth? Allis Like Health. I get it. This is like the one line for your business Earthride. हाँ, तो हमारा प्रॉमिस एंड अर्थराइड इज आप हमसे स्कूटर लीज करो. हाँ. हाईएस्ट अप टाइम, कि आपका स्कूटर आप कमाते रहोगे, हमसे लीज करोगे तो हम आपकी कमाई बढ़ाएंगे. दैट इज आवर प्रॉमिस. हाँ. सो इनफैक्ट लास्ट वन डिलीवरी इज नॉट आवर ओनली कस्टमर. Diagnostic centers are our huge customer. Oh yes, yeah. 3PL companies, again, they come into last mile delivery through e-commerce. So Right. 3PL companies are also our customers. I guess वो technicians and serviceability जो team होती है, Right. for a lot of तो उनका वो पूरा ecosystem. So anywhere, anyone who uses a two-wheeler for making a living. कि आज सुबह मेरी स्कूटी अगर स्टार्ट नहीं हुई तो आज मैं नहीं कमा पाऊंगा. So it would include, pharma sales reps. हाँ. So they have to visit like 5, 10, 15 Correct. doctors Yes. in a day. Yes. Yes. They are on the road all day. Right. Like front-end salespeople. So all feet on the street are a customer base. So similarly, what was your- सर्विस पर्सनल जो आपको एसी ठीक करने आता है. हाँ हाँ, टेक्नीशियन सर्विसिबिलिटी वाले जितने हैं. करेक्ट. हाँ. So there are all our customers. Fair enough. Because for मैंने them, लेकिन अभी तक भी petrol एक is a भी वो cost. कचौड़ी वाले को उस पे नहीं देखा है. बट देन दे डू पुट इट ऑन साइकिल्स. They put it on cycles. They put it on I cycles. mean वो भी जाएंगे. See again, I'm the sure time is one day. huge. हाँ. The time is huge in this. हाँ. And धीरे धीरे करके एड्रेस करना चाहिए. हाँ. Right? Like हाँ. एक पकड़ो फिर उसको करो cater. Because सबकी थोड़े से problem areas at sub level would be different. हाँ, definitely. आपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसको 4 साइकिल दे दिया एंड यू नॉट एबल टू केटर टू हिम. हाँ. आप उसका तो बिजनेस ठप कर दिया ना आपने. हाँ. तो आप एक साइकिल बेच लोगे, दो बेच लोगे, लेकिन बट फिर फिर नहीं कर पाओगे. नहीं, प्लस सी ऑलवेज कीप कस्टमर एट द सेंटर ऑफ द थिंग. ऐसा नहीं होना चाहिए कि शुरू में तो आपने कस्टमर एक्वायर कर लिया डिस्काउंट देके, हाँ, फिर उसको आप सर्विस नहीं कर पा रहे हो एट दैट कॉस्ट. हाँ, वो इन्वेस्टर सेंट्रिक हो गया वो सारा मामला. Investor centric and customer centric. So one point I would like to make, I know you're not asked this, but what I see which sometimes pains me is like people have become very customer centric. तो होने ही चाहिए, I'm not saying, but sometimes they become customer centric at the cost of the employees. I think somewhere employee centric ना खत्म होता जा रहा है, like with this whole funding environment and everything. हाँ. आज आपने रिक्रूट किया, 6 महीने बाद फंडिंग नहीं है तो फायर कर दे रहे हो. करेक्ट. मतलब क्या है ये यार, ये मतलब ऐसा मत करो ना. बिकॉज सी सपोज इफ बिग स्टार्टअप टुडे इट फेल्स, राइट, उसको जो कस्टमर्स होंगे ना दे विल मूव ऑन. हाँ. राइट, इफ इट्स अ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, हाँ, it shuts today, right, the customers will move on. In a day, overnight. जो इन्वेंट्री लेके बैठे हुए हैं, जो रीसेलर्स उस पे हैं, वो भी मूव ऑन कर जाएंगे. वो मूव ऑन कर जाएंगे. कहेंगे चले यार, हाँ हाँ हाँ, मेरे पास 2 लाख की इन्वेंट्री है, चलिए 1.5 लाख में तो निकल ही जाएगी. हाँ, हाँ, लोकल हाँ. शॉप वालों को भेज देता हूँ. हाँ हाँ, राइट, दे विल हैव दैट अफोर्डेबल. सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन होंगे? एम्प्लॉइज.
हाँ राइट. हाँ. उनके बारे में कोई नहीं सोचता. Because I think we never have this. I don't know why has this not caught on, or why nobody talks about this. Because when I was also studying, so there was this one term. There are different type of customers. So there's this whole chapter on management and stuff. I don't remember the chapter, the subject, or whatever. But this thing I always remembered. There are different kind of customers, and your employees are your first customers or internal customers. So इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं कस्टमर्स का भी ध्यान रखता हूँ, एम्प्लॉइज का भी, तुम सिर्फ कस्टमर्स का भी ध्यान रख रहे हो तो भी दे आर योर फर्स्ट कस्टमर्स. योर एम्प्लॉइज आर योर फर्स्ट और इंटरनल कस्टमर्स, एंड नोबडी एवर टॉक्स अबाउट देयर एम्प्लॉइज एज देयर कस्टमर्स. राइट. दे नेवर डू दैट. आप एम्प्लॉयज का ख्याल रखो, वो आपको कस्टमर ला के देगा, कस्टमर्स का ख्याल रखेगा. मैं ये लिख के दे सकता हूँ आपको. हायर करेक्टली. व्हेन यू हायर ऑन द रॉन्ग प्रॉमिस, अगेन when you hire for the wrong reasons, when people join your organization for the wrong reason, that is where the problem happens. हाँ, आपके कमिटमेंट में गैप है कहीं पे. आपके मन में गैप है. अगर आप कह रहे हो नहीं तो हमारी स्टार्टअप ज्वाइन करो, हमें तुम्हें मिलियनर बना दें हिसाब से अगले 2 साल में, एंड आपको नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग नहीं मिलती और बेचारी हिसाब के वैल्यू 0 हो जाती है, तो फिर तो आप पेन क्रिएट कर दिया ना आपने. हाँ हाँ. तो दैट गाय वोंट वर्क. आप आपको फंडिंग बहुत सारी मिल गई है ना, आप एम्प्लॉयज तोड़ रहे हो सामने वाले कॉम्पिटिटर के विद बेटर, and he's coming to you just because of the salary package. Somewhere they're also coming for the wrong reasons, right? Just because of the salary package. तो फिर कहीं ना कहीं वो इफेक्ट होता है. I'm not saying do not move because we're getting a better salary, but there should be more reasons to it. हाँ. Businesses should be built on fundamentals. So have some principles, have some integrity, do your research, know your market, know your product, know your customer, and deliver on your commitment. Absolutely. Don't go for, so मैं एक लाइन कहता हूँ, it comes from a movie, but वैल्यूएशन के पीछे मत भागो, वैल्यू क्रिएट करो, वैल्यूएशन झक मार के तुम्हारे पीछे. ये कौन सी मूवी है? ये 3 Idiots में है. हाँ, कि काबिल बनो. हाँ हाँ. कामयाबी के पीछे मत भागो. तो लोग ना आज वैल्यूएशन के पीछे भाग रहे. वैल्यूएशन के पीछे मत भागो, वैल्यू क्रिएट करो, वैल्यूएशन झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी. हाँ. I think you're right. Zoho is a big example for that. Zoho is an amazing. I don't know ये सब statements के बाद मेरे को कोई funding देगा कि नहीं. Really good. Those are my values यार. By the way, Hero has come up with a last mile delivery vehicle. Oh, amazing यार. I saw that product at ABS. Oh, are we talking about the same? भारत mobility पे देखा था. Amazing product. The scooter comes out of the auto. I love that product. That is like in a long time, I've seen true innovation. Nobody does that. I mean, it is. Nobody does that except Batman. Use case. Amazing use case. And in the whole world, there isn't a single vehicle like that. A 3-wheeler that comes, a 2-wheeler comes out of that 3-wheeler. Innovation to start coming from India. Yeah. This was the one of the Hero and is it crazy is an like internal that. project. तो मैंने उस टीम से बात करी. Oh, you got a chance to talk to them. I was there ना Bharat Mobility Expo. Oh, so that right. product guy was there. They must have showed it coming out. Like they must have got the scooter out. Unfortunately बहुत भीड़ थी उसमें. मैं पहले 2 दिन नहीं जा पाया, तो थर्ड डे गया तो उसमें भीड़ बहुत थी. हाँ. तो कहते सर अभी हम नहीं कर पाएंगे, बहुत भीड़ है ना. हाँ. तो but I've seen those videos. It's crazy. And I'm like, what? This concept is amazing. It is. And use के साथ देखो, जो डिलीवरीज होती हैं आपके 3-wheeler की, हाँ, वो आपके दिन में होती हैं. हाँ. राइट. रात में भी होती हैं, बट 6-7 डिलीवरी 3-wheeler जो डिलीवरी करते हैं वो यूजुअली दिन में होती है. हाँ. रात को तो 2 बजे तक तो सिर्फ वो राइडर ही आते हैं, है ना. एक भाई 3-wheeler चला रहा है. हाँ. है ना. हाँ. शाम को दूसरे भाई ने निकाला, वो फूड डिलीवरी कर रहा है या ई-कॉमर्स की डिलीवरी कर रहा है 2-wheeler पे. मेरे को तो the second I saw this, I thought like this is the time where they can break the last mile delivery into 2 parts. Exactly. Like you could actually. ये भी हो सकता है. आप इसको इस तरह से सोचो, आप लेके गए माइक्रो डिलीवरीज, आप एक लेके गए, आपको पूरे एरिया में डिलीवरी करनी है, लेट्स ऑफ FMCG गुड्स. हाँ. एंड देयर आर स्टिल एरियाज इवन इन शहर जिसमें वो 3-wheeler नहीं घुस सकता. हाँ, 3-wheeler नहीं घुस सकता. गलियों में 2-wheeler जा सकता. लास्ट की 5 डिलीवरीज आप स्कूटर में एक एरिया पे सेफ जगह पे खड़ा किया, शॉप के सामने, वो देखता रहा, लॉक किया उसको,
उस एरिया के 4 गलियों के आपने सामान रखा स्कूटी पे, डिलीवर करी, आप वापस And they have लगाया। two sets of batteries. They have different sets of batteries. So for our viewers, let me tell you. So we are talking about Hero car. This one product. हाँ. I just realized that it hasn't come out. It's a 3-wheeler. Yes. And out of the 3-wheeler, आगे का सामने जो 3-wheeler पे आपका स्कूटर जैसा होता है, that whole thing comes out. हाँ. और then a 2-wheeler का पहिया drops and it becomes a scooter. दोनों की ड्राइव ट्रेन और बैटरीज अलग हैं ऑब्वियसली। हाँ दोनों का ड्राइव ट्रेन बैटरी दिस विल बी अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। बहुत सारे अच्छे यूज केसेस के आ सकते हैं। हाँ एंड दैट इज द फर्स्ट माय फर्स्ट थॉट वाज ओ फाइनली अ ट्रू इनोवेशन कमिंग आउट ऑफ दिस कंट्री। तो आई वांट इंडिया से वो इनोवेशन आनी चाहिए। एंड कंपनीज लाइक हीरो आर एक्चुअली एंड इट्स एन इंटरनल प्रोजेक्ट ऑफ हीरो। हाँ यस उन्होंने कुछ साल पहले भी दिखाया था ये इन वन ऑफ द एक्सपोज दे शोड इट बट नाउ दे हैव रीच्ड टू अ वेरी प्रोडक्शन रेडी सिचुएशन। यस well thank you so much Mr. Dhairya. That was a lot of information and in a very in a way that I have not seen it coming from a lot of entrepreneurs. So okay, I'll put this like briefly in 2 small pieces because I think it is a definite learning that can be taken away from this. One is what do you believe in, like when you're trying to build a company, build a product, what do you believe in, like and what would you recommend or what would you advise people who aspire to do the same? Right. So if you could. I think what you believe in is extremely important. I think somewhere you have to create value for the people that you are serving. Okay. Like are you solving a pain point for them? And can you deliver that value at a price point where you can make a profit? Right. These are the 2 things. And keep on delivering on that promise consistently. And when you're delivering that promise to that customer, are your employees happy? मतलब I think वो employee focus भी रहना ज़रूरी है. That your employees should be happy enough to deliver on that promise. Right. And so deliver on your values while also being good to your employees. Right. And anyone who wants to be an entrepreneur, I think really if that was your question, I'll say don't. Sounds controversial, but don't do a startup. If you want to do a startup because valuation का बड़ा मजा आता है यार, वैल्यू बनाएंगे, वैल्यूएशन क्रिएट करेंगे और फंडिंग उठाएंगे. Don't do a startup if you think that it's going to be easy and it's all fun and it's all going to raising money and everything. Yeah. Don't do a startup because you hate your boss, right? Those are the wrong reasons to do a startup. The right reason for do a startup is you have a problem to solve. You it's going to be a painful journey. Are you ready for that pain? But yes, I mean entrepreneurship is amazing. When you do your own thing, that fulfillment is amazing. You might not have a lot of money in the bank, but that fulfillment that you get from entrepreneurship is amazing as long as you are serving the people the right way, and you work with the right people, and it's amazing. Like you can do a lot of stuff which you cannot do probably in a job, but do it for those reasons. Don't do it because you think it's easy money and funding, and don't do it if you think यार funding मिल जाएगी फिर करूँगा startup. आप नहीं कर पाओगे. I'm sorry. Just sorry for being a devil's advocate. अगर आपको लगता है funding मिल जाएगी और उसके बाद में startup करूँगा, मत करो. Like seriously, if you're not ready to is this very common? Funding मिल जाती है. बहुत सारे लोग हैं. अरे सर बहुत बढ़िया business idea है मेरे पास और बस फंडिंग मिल जाए सर, और ये तो स्केल पे ही हो सकता है काम. जब मेरे पास 1000 यूनिट्स होंगे ना, तभी प्रॉफिटेबल हो पाएंगे. मैंने फिर रहने दे भाई तू, यार मिनिमम 2 करोड़ तो रेज करना पड़ेगा टू स्टार्ट दिस बिजनेस. मैंने मत करो भाई, सॉरी मत करो फिर. Got it. Thank you, Dhairya, so much. That was a great conversation with a fellow motorcyclist and an entrepreneur, and successful at that. Thank you. So, and plus some of the advice and the insights you gave were really irreplaceable. Thanks, Akhil. I had a great time. Seriously, like talking about motorcycles. And I'll say all the best with your podcast. Thank you so much. Guys, I had a great time conversing with Akhil. I saw the lineup of the next people on this podcast. They're amazing people. So do subscribe to their channel. I think they have a lot of good content ahead. And yeah, do subscribe to their podcast and keep watching. Thank you so much, Dhairya.